Assalamu alaikum. Yesterday we started the equation of circle, and we know the general equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, where h, k are the coordinates of the center of the circle and r is the radius of the circle. We did this equation of circle और इसके थ्रू हमने कुछ प्रैक्टिस किए और पता चला कि अगर इक्वेशन लिखी हो तो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड रेडियस। ये बहुत से कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए। स्क्वायर भी कंप्लीट किया। अगर आपका स्क्वायर कंप्लीट ना हो तो पहले हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। देन वी डिड सम प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, जो कि ओ लेवल थी, हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, एंगल मेड बाय डायमीटर इज 90, angle at the circumference are equal, mean angles in the same segment are equal. Cyclic quadrilateral के opposite angles are supplementary. Radius and tangent are perpendicular. Center से अगर एक line perpendicular draw की जाए तो वो chord को bisect करती है and vice versa. So इस तरह से हमने थोड़ा सा introduction किया। Vertical line पे x coordinate कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। सो नाउ सम क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। Okay, let's attempt this question. Question 1 is the circle x square plus y square plus 4x minus 2y minus 20 is equal to 0 has center C and passes through points A and B. State the coordinates of C. C means center के coordinates बताने। एक ऑप्शन तो ये कि स्क्वायर कंप्लीट करके बताएं, वैसे मेंटली भी बता सकते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। बताइए। -2 एंड +1 ऐसे ही है ना। जो x कोऑर्डिनेट होगा, x का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ मीन साइन भी चेंज, और जो y का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ और साइन चेंज। और अगर ये डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा, कोई इश्यू नहीं, स्क्वायर कंप्लीट करके देख लें। मीन x स्क्वायर प्लस 4x plus y square minus 2y minus 20 should be shifted on the other side. So इसका स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, जो कि अभी हमने क्वाड्रेटिक्स टॉपिक में लर्न किया। So how to complete the square of x square plus 4x? It is x plus half of 4 x plus 2 whole square minus 2 square, और y square minus 2y का स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे? It is half of 2 is 1, so y minus 1 whole square minus 1 square is equal to 20. So we got x plus 2 whole square plus y minus 1 whole square, और ये minus 2 square minus 4, और ये minus 1 minus 5 हो गया। So minus 5 on the other side will become plus 5, and 20 plus 5 will make it 25. Now you can easily tell the center के coordinates। बताइए, इसका साइन चेंज और इसका भी साइन चेंज। So coordinates of the center is -2 1, and radius उसने पूछा नहीं है। What's the radius? Radius is 5. So the coordinates of center C is -2 1, जो कि मेंटली बताया जा सकता है, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो स्क्वायर कंप्लीट करके बता सकते हैं। It is given that, now next part, it is given that D midpoint D of AB
has coordinates 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. Where is A and B? Circle is passing through A and B. So जो circumference है circle का, उसके ऊपर कहीं पे A और B होगा. So circumference पे कहीं पे आपके पास A और B होगा. Find करनी है equation of AB, giving your answer in the form y is equal to mx plus c. How to find the equation of line A? बेस्ट तो यही है कि आप, अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, सॉरी इक्वेशन ऑफ ए एंड बी, तो आप इस सर्कल को थोड़ा स्केच कर लें अपने पास. सो थोड़ा सा हम स्केच करते हैं ताकि आइडिया हो जाए, शायद हमें बेहतर पता चल जाए. सपोज दिस इज अ सर्कल and A and B are lying on the circle. Say this is A and this is B. We don't know where exactly A and B are, but they are lying on the circle. So हमने यहाँ पे लेबल कर दिए. इस सर्कल की और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? Midpoint of AB. We know the midpoint of AB. And what is the midpoint of AB? It is, if I join A with B, इसका जो midpoint है, here is midpoint M. What are the coordinates of M? 1.5, mean 1.5, 1.5. जी बताइए, क्या बता, सॉरी ये क्वेश्चन में दिए हुए थे. मिड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन था. और 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. अच्छा डी मिड, बी मिड पॉइंट है, सॉरी एम नहीं है, डी है, मैं एम लिख रहा हूं इसको. इट इज डी, this is D. If this is the midpoint, then it means these two sides are equal. Who can tell me how to find the equation of line AB? Okay. जी आप कह रहे हैं कि ये सेंटर है यहाँ पे, कहीं सपोज सेंटर से जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि हमारे पास हैं, we have the coordinates of center, we have found it in A part. What were those? It was -2, +1. ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं. अच्छा अब आप ये कह रहे हैं कि हम CD लाइन का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल AB का ग्रेडियंट आ जाएगा. और ग्रेडियंट जब AB का आया तो AB के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. बट नेगेटिव रेसिप्रोकल तो तब करते हैं जब वो परपेंडिकुलर होता है. यस ये कैसे पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर है? वो लास्ट प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी क्या थी कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट्स द कॉर्ड and vice versa. Now this is bisecting the chord, it means this is perpendicular. So this angle is 90 degree. So yes, you are right. Find the equation of AB. So first find the gradient of AB. Sorry, not AB, gradient of CD. Gradient of CD, y2 minus y1, mean 1.5 minus 1 over 1.5 minus 2 plus 2 हो जाएगा. Gradient is 2/7. So gradient of CD is 2/7. Then what is the gradient of AB? जी हमने सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये किया था कि अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हों, उनके ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल. So the gradient of CD is 2/7, then the gradient of AB will be negative reciprocal, mean -7/2. So once you have the gradient और उस लाइन AB के ऊपर एक पॉइंट भी है D,
सो अब आप इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू यूज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू x माइनस एक्स वन, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखना है। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। So it is y minus y1 was 1.5. Gradient was minus 7 by 2 x minus 1.5. इट्स बेटर कि आप 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लें और माइनस 7 को उस तरफ। सो 2y 1.5 into 2 is 3 minus 7x minus minus plus. What is 7 into 1.5? 10.5. So the equation 2y is equal to minus 7x. 10.5 plus 3 is 13.5. Now division with 2. So minus 7 over 2. What is 13.5 over 2? Gradient 1 over 7 था। किसी ने मुझे 2 over 7 बताया था, सो मैंने 2 over 7 लिख दिया। ओके, सो ग्रेडियंट तो 1 over 7 था। ठीक, करेक्शन कर लेते हैं। सो ग्रेडियंट वाज 1 over 7, तो फिर तो ये काफी करेक्शन हो जाएगी। सो इट मींस ग्रेडियंट ऑफ ए बी विल बी पॉजिटिव -7 ओनली। जी, कैलकुलेशन मिस्टेक। So y minus 1.5 is equal to -7x plus 10.5. So y is equal to minus 7x. 10.5 plus 1.5 is 12. So this is the equation of the line AB. So the second part was find the equation of line AB. तो हमारे पास equation of line AB आ गई। Clear है भैया? Okay, third part है इसका। Its third part is using by calculation find the coordinates of A and B. Simultaneously. We have the equation of line, we have the equation of curve. Line and curve दोनों की equations हैं हमारे पास. So we will solve them these two equations simultaneously. और we know कि जब simultaneously solve करते हैं we get the points of intersection. So इन two equations को आप simultaneously solve करेंगे, आपके पास A और B के coordinates आ जाएंगे। जी simultaneously solve हो जाएगा ना? सम्राट, simultaneously समझ आ रहा है कि क्यों solve करना है? क्योंकि हमें A B find करना है और A B is a point of intersection. अब्दुल्ला आप क्या कह रहे थे, आप किस मेथड से कह रहे थे? वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे होंगे? आप कह रहे हैं लाइन की इक्वेशन है, डी के कोऑर्डिनेट से भी हैं, फिर भी ए और बी तो नहीं आएगा। मिड पॉइंट गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स बताएं कैसे आएंगे? कोई मेथड नहीं है। ओके जी, ये साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगा, वो इश्यू नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, here is question 2. The circle C with center at the point A has equation x square plus y square minus 10x plus 9 is equal to 0. Part A and B are, he is asking for the coordinates of A, means center, and radius of the circle C. जी फाइंड करें. सिर्फ क्या करना है हमने? We have to complete the square, center के coordinates आ जाएंगे and then radius. So minus 5 square 25, on the other side positive 25, 25 minus 9 is 16. So the coordinates of the center mean, what are the coordinates of A, Abdullah? 5 and minus 5 and 5 and 2, 5 and 0. 5 and 0, इसका मतलब सर्कल y एक्सिस पे है या x एक्सिस पे? सेंटर, सॉरी, सर्कल का सेंटर कहां पे है? x एक्सिस पे है. So the center of the circle is on x axis. So its radius is 4. हाँ जी, ये जो 2 मार्क्स है ना, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन एडेक्सल का है. जब स्टार्ट हुए थे, ये आपको पता है, ये सिलेबस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये 2019 उसके बाद ऐड हुए. उससे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल सिलेबस में नहीं थे. तो 2019 में हमारे पास पास पेपर्स या आप ये कह लें कि मटेरियल नहीं था. उस वक्त मैंने कुछ क्वेश्चंस की वर्कशीट बनाई थी एडेक्सल में से. तो ये एडेक्सल का क्वेश्चन, और एडेक्सल में मार्किंग जरा ज्यादा होती है. मीन हमारा जो नॉर्मली क्वेश्चन 2 मार्क्स का और आ रहा होता है वो उनका 3 मार्क्स का होता है. ये थोड़ा सा चेंज है. तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है एडेक्सल का. अब ये 2 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता नहीं है. ये क्वेश्चन हमारे पास अभी आया हुआ था. जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो हमारा अपना था, वो 1 मार्क का था टोटल. ओके ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ये आगे. एंड सी पार्ट, the coordinates of the points at which C crosses x-axis. C means circle. You need to find the coordinates of the point at which C means circle crosses x-axis. Mentally क्यों बता सकते हैं without any working? वो वर्किंग तो ना, वो तो वर्किंग हो जाएगी. मेंटली किसी को मेंटली समझ आ रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? कीपिंग इन माइंड कि सेंटर इज 5 0, रेडियस इज 4 1 and 9. Manal, how to get this mentally? Yes, because we know कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे सेंटर है इसका, ये सेंटर था, दिस इज 5 0. इसका रेडियस कितना था? रेडियस इज 4. सो रेडियस इज 4 मीन व्हाट इज दैट पॉइंट? दिस इज 1. रेडियस 4 मीन 4 यूनिट लेफ्ट 4 यूनिट राइट. सो 4 यूनिट राइट पे जाएगा तो इट इज 9. सो एक्स एक्सिस को ये क्रॉस करेगा 1 and 9 पे.
बट अगर ये मेल्ट ही नहीं होता, कोई इश्यू नहीं है, आप क्या करें, आप crosses x axis, we know at x axis y is 0, so put y 0, आप इसमें y 0 पुट करें, so you will get the equation x square minus 10x plus 9 is equal to 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, you will get the answer x is equal to 1 and 9, mean the circle C will cross the x axis at 1 and 9। डन। इसमें 2 मार्क्स, अगर ये हमारा पेपर हो 2 मार्क्स का हो तो हम इसकी वर्किंग शो करेंगे। और अगर कहता है यहाँ पे, इसने यहाँ पे तो उसने कहा है ना फाइंड, देखिए ना फाइंड, अगर इसमें कहता स्टेट तो हमें डायरेक्ट लिखना चाहिए, राइट डाउन द एक्स पॉइंट एट विच इट क्रॉसेस, तो राइट डाउन स्टेट, ये कमांड वर्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको विदाउट वर्किंग बताना है। फाइंड करने के लिए कहता है तो आपको वर्किंग इसका मतलब शो करना है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पार्ट, given that given that the line L with gradient 7 by 2 is a tangent to C, circle C, and that L touches C at the point T, find an equation of the line which passes through A and T। स्केच बनाए ताकि क्वेश्चन समझ आए। He is saying this is a circle, इस सर्कल की हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन क्या है, वी नो द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 50। ओके, वो कह रहा है कि एक पॉइंट ए, हमें एग्जैक्टली पॉइंट ए कहाँ पे वो नहीं पता। वी नो इट्स ग्रेडियंट इज गिवन दैट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल विद 7/2 इज अ टेंजेंट टू सर्कल। सो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि टेंजेंट हो सर्कल के। सपोज दिस इज अ लाइन व्हिच इज टेंजेंट and this is basically line L, its gradient is 7/2। we or it says given that the line L with gradient 7/2 is a tangent to circle C and that L touches C at the point T, so this point is T, then we have to find the equation of the line which passes through A and T। A kya tha? Center, so A and T mean we want to find the equation of this radius, this circle, this line, green colored वाली line इसकी इक्वेशन फाइंड कर। तो देखिए, आपको जब आपने स्केच कर लिया, फिर आपकी प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपको ये बात पता है कि these two lines are perpendicular। if you the gradient of that line is 7/2, then what's the gradient of this line? -2/7। and once you have the gradient of this line, on this green line we have already point A 50, so we can find the equation। so by using y minus y1 is equal to m into x minus x1, so y minus 0 gradient -2/7, x minus 5, so 7y is equal to -2x plus 10, or 2x plus 7y is equal to 10। this is the equation of the line which passes through A and T, right? so जहां आपको क्वेश्चन की नहीं समझ आए उसका थोड़ा सा स्केच बना लिया करें, so काफी आपको आइडिया हो जाएगा। okay, here is another question। the points A and B lie on a circle with center P, so P is the center of the circle,
So here is P. This is the center of this circle. The point A has coordinates 1, -2, and the midpoint M of AB has coordinates 3, 1. The line L passes through the points M and P. Find an equation for line L. हो जाएगी ना इक्वेशन फॉर लाइन एल, फाइंड कीजिए लाइन एल की इक्वेशन कैसे करेंगे, मेथड बता दें किसकी, P के कोऑर्डिनेट. डू वी नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल? Again, my question: do we need the coordinates of B to find the equation of line L? We don't need B. मुझे B भी नहीं चाहिए, P भी नहीं चाहिए. Without B and P, we can find the equation of line L. Can we? आप देखिए ना, लाइन ए बी के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं ना आपके पास, A and M. सो A और M के 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, लाइन ए बी का ग्रेडियंट आ जाएगा. ठीक हो गया. उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लाइन L का ग्रेडियंट आ जाएगा, और लाइन L के ऊपर भी एक पॉइंट है M. So we can use that point. अच्छा ये बताइए, negative reciprocal की reason, is that perpendicular? How? Midpoint. Because M was midpoint, the question says A और B का midpoint. जब midpoint होता है तो इसका मतलब that line from the center is perpendicular. So line L की equation आपके पास आ जाएगी. चल जल्दी से find कर ले, शायद आगे चाहिए हो. जी आमना, did you get कि how to find the equation of line L? Yes, sir. Okay. क्या है भाई equation? 3y equals to इलियास, आ रही है इक्वेशन? ये कर रहे हैं या नहीं? ये करेंगे. आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले लेक्चर्स कंप्लीट सुन लिए थे? सो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट ए बी की का ग्रेडियंट फाइंड किया, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, लाइन एल का ग्रेडियंट आ गया, और लाइन एल के ग्रेडियंट के बाद आपके पास एक पॉइंट था 3 1 m which was on the line L. We can use that point to find the equation of this. So everyone got the same equation, 3y is equal to -2x plus 9. Okay, next is B part. Given that the x coordinate of P is 6, given that x coordinate of P is 6, use your answer to part A to show that y coordinate of P is -1. उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन है आपके पास, उसमें x कोऑर्डिनेट 6 पुट कर देंगे here, so you'll get y coordinate. So 3y is equal to -3, so y is -1. So it means, what are the coordinates of P? The coordinates of P is
x coordinate 6 and y coordinate -1. C. Find the equation of the circle. Find an equation for the circle. हो जाएगी। समरा बताइए इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे आएगी? जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x minus h whole square y minus k whole square is equal to r square. So we know the coordinates of center are 6 and -1. So equation will become x minus 6 whole square plus y plus 1 whole square is equal to what? रेडियस. सो समरा हमने रेडियस फाइंड करना है. सो रेडियस ऑफ सेंटर से लेकर ए तक डिस्टेंस फाइंड कर लें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. सो डिस्टेंस फार्मूला से आप ये डिस्टेंस एपी डिस्टेंस इज बेसिकली रेडियस है. सो वो फाइंड करें. सो पी के कोऑर्डिनेट्स तो 6 -1. डिस्टेंस फार्मूला याद है ना हमें? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1. So -1 -1 plus 2 whole square. So what's the radius? Under root 26. Is that square root 26 is the radius? So what should I write here? Under root 26. Abdullah, यहाँ क्या लिखूं equation? R है ना under root 26. So radius under root 26. आपको तो r square लिखना होता है, तो under root 26 square which is 26. So the equation of the circle is x minus a is 6 whole square plus y plus 1 whole square is equal to 26. क्वेश्चन 4 को हम जस्ट डिस्कस करेंगे. हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं. Figure 6 shows a sketch of the circle C with center N and equation x minus 2 whole square plus y plus 1 whole square is equal to 169/4. इस सर्कल की इक्वेशन गिवन है. What are the coordinates of N? 2 and -1. What is the radius of the circle? Under root, so 13/2, 6.5. So radius is 6.5. क्वेश्चन में उसने पार्ट ए और बी यही है. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन, फाइंड द रेडियस ऑफ सी. ओके, नाउ बिफोर आफ्टर बी पार्ट इट सेज द chord AB. You can see the chord. The chord AB of C is parallel to x-axis. Do we know something special about this line? It says the chord AB of circle C is parallel to x-axis. Its y coordinate is नहीं, जीरो नहीं हमें पता, कांस्टेंट. y कोऑर्डिनेट जीरो तब होगा जब वो x एक्सिस होगी. So it says x एक्सिस के पैरेलल है, बट इसका मतलब y कोऑर्डिनेट थ्रू आउट विल बी सेम, कांस्टेंट. And also it tells lies below the x-axis. Lies below the x-axis mean y coordinate negative होगा. And is of length 12 units as shown in the diagram. हमें find करने हैं coordinates of A and B. Think about it. कैसे find करेंगे coordinates of A and B?
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी अगर आपने बता दिए तो इसका मतलब है कि टॉपिक अच्छा है। एन फाइंड किया हुआ, एन था, क्या था एन? 2 - 1। Radius was 6.5. फिर वाई सेम होगा। लाइन ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका वाई सेम होगा। अच्छा, विदाउट वर्किंग हो सकता है ये आंसर, इसका आंसर आप विदाउट वर्किंग आ सकता है, लेकिन वर्किंग है सारी माइंड में करने वाली। ओके, आई एम डूइंग दैट। So Manal is saying कि we will draw a line from N to here. अच्छा, n के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है ना, n के कोऑर्डिनेट्स हैं, we know the coordinates of n are 2 - 1. अच्छा, आपने ये जो लाइन ए बी है हॉरिजॉन्टल लाइन है, वी ऑलरेडी नो दिस। अब अगर आप कह रहे हैं कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मींस दैट पिंक लाइन इज अ वर्टिकल लाइन, ऐसे ही है। एंड इफ इट इज अ वर्टिकल लाइन, इट्स x कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। कैन यू टेल मी द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? इट इज 2। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज 2। ओके, इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, इट्स x कोऑर्डिनेट इज 2। वी डोंट नो y कोऑर्डिनेट, बट x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया। सो वी नो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे x कोऑर्डिनेट्स कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज, सॉरी, वी नो द लेंथ ऑफ AB is 12 units. Length of AB is 12 units, and this is a midpoint, so 6 unit right and 6 unit left. So B ka what will be x coordinate? 8, 2 plus 6 means 6 unit right, 2 plus 6 is 8, and 6 unit left, 2 minus 6 is -4. Are you getting this? ये हमने x coordinates find कर लिए. So x coordinates are -4 and 8. Now we have to find y coordinate. So x coordinate का issue नहीं रहा, y coordinate find कर. How to find y coordinate? सर्कल की इक्वेशन है ना हमारे पास. So सर्कल की इक्वेशन में आप x8 पुट कर दीजिए, you will get y coordinate. और दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, वो चेंज नहीं होंगे. क्लियर है जी? एनी क्वेश्चन? ये मैं आपको भेजने लगूं ये. अच्छा, इसकी भी लेनी है तो ले लें. मैं ये वर्कशीट सेंड करूंगा, इसके हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं. आप इसके आई थिंक 10 क्वेश्चंस हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने इस वीकेंड पे अटेम्प्ट करना है. और अगर किसी के कोई प्रीवियस लेक्चर्स मीन बेसिक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक्स मिसिंग है, और अगर आपके पास लेक्चर्स भी नहीं हैं, तो यू कैन आस्क मी दोज लेक्चर्स, और प्लीज उनको कवर अप करें इस वीकेंड पे. क्वाड्रेटिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आगे फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा और हर टॉपिक में प्रॉब्लम आएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.